have a great diverse panel over here, uh, also showcasing the women empowerment that we have. And we are going to be talking today about different sectors, um, from fashion to herbal care to women-led, empowering women-led startups, agriculture, and someone who makes the requirement of the right skill or the right manpower. They both marry off with a ma'am. So thank you for having being here, and thank you ET for hosting a great summit over here. Uh, Starting with, uh, I would like to start with Mr. Anup Khandelwal, who's the managing director and founder for Kirana King. Just as a small introduction for Sir, Sir has been, a veteran in Jaipur, has studied in Jaipur from 1996, did his BCom, then was in Delhi for a couple of years and has been in Dubai for last 27 years. And we have imported back the Kirana King back to Jaipur. So thank you. So we just wanted to, ask few questions regarding your business. If you can just introduce what is the objective of your business? Well, basically, my background is in trading in agro commodities, and myself is third generation. And when we started our business long time back, the idea was to take local business to global, so which I did successfully. And after having been 50 plus country globally, in 2014 the idea of the Kirana King came. The idea was that ki basic staple, so we are into basic agri products. तो आइडिया एक था कि बेसिकली जो कंज्यूमर की जो हैबिट्स जो चेंज हो रही है, तो कंज्यूमर पैक में ये सब चीज़ बिकेगी, तो दैट्स हाउ वी गिव द नेम किराना किंग. तो किराना किंग का जो हमारा जो बिजनेस है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, यानी कि मैन्युफैक्चरर और मार्केट के बीच में वी एक्ट एज ए मार्केटिंग. सो वी हैव ए और प्रोडक्ट्स बेसिकली इन द नेम ऑफ किराना किंग इन बेसिक स्टेपल्स विच वी सप्लाई टू अक्रॉस राजस्थान. And in between, basically, while we was working in Jaipur, more than 3,000-4,000 kirana retailers. So there was a some passion in terms of empowering traditional kirana stores, because I have seen many part of the world that कि India में जो है ना conversion ज़्यादा better है वनस्पत creating in terms of retail sector. So we that took initiative also, and so we in that basically we start giving a service franchise also. But by grace of God, that is the मॉडल विच गेव अस लॉट ऑफ नेम. ठीक है, बहुत हमको उससे नाम मिला और आज उससे काम भी मिल रहा है. तो बेसिकली वी आर इनटू ए ग्रोसरी सेगमेंट एंड वी आर इनटू सप्लाई चेन बिजनेस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. So in layman, more as a B2B business, where you're repackaging, sourcing the agri products, repackaging it, and putting it forward back in the market. बिल्कुल बिल्कुल. So very interesting work. What is it that as a firm like yours would require from the government to make your business better and put your business outside Rajasthan or outside the country? What are those levers that will enable you to perform better, market better, and grow better? So see, we are into agri business, and agri business is a basically little bit challenging business compared to the other products. So our business is a regional specific rather is a national play basically. Except such products, जैसे आज मान लीजिए मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड ऑयल यू विल सी वेरियस पार्ट ऑफ बेसिकली आउट ऑफ राजस्थान ऑल्सो वी कैन एक्सपोर्ट बेसिकली. सो देर आर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच आर देर इज ए क्वाइट रीजनेबल पोटेंशियल. सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हमारी बड़ी टेढ़ी है, जैसे मंडी टैक्स के इशूज़ हैं, कृषि कल्याण टैक्सेस के हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसी चैलेंजेस हैं जो लोकल कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी वजन है और उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है. तो उनके बावजूद भी हम लोग उस प्रोडक्ट को अदर स्टेट्स में नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि इज़ अ वेरी थिन मार्जिन बिजनेस. तो अगर उसमें कपल ऑफ परसेंटेज का अगर प्लस माइनस अगर हो गया, तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कुछ लोकल बिसाइड जीएसटी, तो लोकल जो यहाँ के जो टैक्सेशंस हैं उसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता है, तो ही हमारी जैसी कंपनियाँ आगे बढ़ पाएगी. बिकॉज वी सी एज ए क्वाइट लार्ज प्ले, इट डजंट मीन्स दैट वी कांट ग्रो अदर देन स्टेट्स. काफ़ी कुछ जीएसटी का भी रोल है. जैसे आज हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज अदर स्टेट्स में या
कंज्यूमर पैक में जो चैलेंज है वो जीएसटी के इश्यूज हैं कि अप टू 25 केजी तक का जो चावल चीनी आटा है उस पर 5% जीएसटी है, उससे ऊपर वाले पे नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और वो थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिले तो देर आर मैनी कंपनीज फ्रॉम राजस्थान who can easily be, it means presentable in multiple states. Right. So, sir, just a follow-up question on that. So, a company like yours, is it better to start जो forward linkage कर रही है, जो agriculture sector में, should they start regionally or should they plan nationally? So, is it a regional play or a national play? See, as I told you, more is our regional play, but there are certain product. Let's say we are trading in rice also. So राजस्थान में राइस खाया जाता है, but basically उगता नहीं है. Sure. Right. So let's say we have a base for rice in Delhi. So we are selling to UP also. And there are certain products basically which are available in Rajasthan. Let's say mustard seed, mustard oil, which we are sending to Madhya Pradesh also. So there is a product specific. I will not say overall because we are into multiple product. We are not a manufacturer. ठीक है. We are dealing in couple of products, giving the shape in the name of Kirana King. Brand is all about मतलब जितना आपके पास में माइंड शेयर है उतना मार्केट शेयर है, हर चीज़ नाम से बिकती है. तो आने वाला जो इंडिया की जो पॉपुलेशंस हैं वो ब्रांड से भी पॉपुलेशन है, राइट. लाइक कॉस्मेटिक, लाइक शैम्पू, साबुन, पर्सनल केयर, उसमें सब ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुके हैं. तो वी सी ए क्वाइट लार्ज फ्यूचर इन इंडिया कि परिवार भी छोटे हो गए हैं, किचन भी छोटी हो गई है, पेट भी छोटे हो गए हैं. तो अब लोगों का थोड़ा सा हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा अवेयरनेस है. तो दैट्स हाउ वी सी और फ्यूचर कि दैट देयर इज ए क्वाइट लार्ज फ्यूचर फॉर एवरीवन. इट्स अ लार्ज प्ले. इट्स नॉट दैट वन कंपनी और टू कंपनी कैन कैटर. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंज. व्हाट वी कैन सी बिटवीन 10 years and today is dramatical change. And COVID gave us very lot of मार्केटिंग सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्टली कि पहले लोग प्राइस कंपैरिजन करते थे, आज नहीं करते हैं इन जनरल बेसिकली. देयर इज अ बिग थिंग्स आर मूविंग अहेड. So just picking on one point you mentioned, and as a last question before I come again to you, you mentioned about quality in agri sector, because agri sector mein quality is something which has to be looked at tremendously. Any suggestions or anything that you've adopted to make sure that whatever is going out is a quality product? Any technology enablement that you've done or you think should be done in this sector? Right, definitely. See, I will not say it's a sector. It depends on company to company. That quality is all about that how a individual brand or individual company, like we work on QCC mantra, quality product, competitive price, and convenience to the customer. It means it should be available everywhere. That is our thought. Okay, that's great. Thank you so much, sir. I'll come back to you. Ma'am, moving on to you. Everyone, Dr. Shweta Chaudhary, she's the founder and director for Innov startup, which is an accelerator. I saw outside the room a lot of people coming to you and asking a picture with you. Ma'am, very interesting space. And we were discussing, a lot of areas how we can enable women empowerment. But before I start with question, what Innova does, if you can just brief in 2 lines. Thank you, sir. And thank you for this opportunity here to share my journey and idea about the business landscape of Rajasthan. Innova is a startup accelerator, to be very core and basic. Accelerator as in, it was a brainchild which came from the thought of being from Jaipur, Rajasthan. When I went out to study, I am a graduate from Pune University, been in Bombay, Maharashtra, Gujarat, Northeast, lot of places for almost 16 years of my life. And when I came back, what I realized was, as a professor, there were a lot of students who were telling me, can we get admission into colleges in Mumbai? Can we go to Pune? Can we go to the US? Can we go to Bangalore to study? So there were questions which came to my mind, well, what is missing here? What is that we are not able to do? Similarly was a question when I started working into the startup ecosystem, being as an incubator, being director to a lot of youth-based startups, mentor to them. We are moving at a very fast pace into the ecosystem where the number of startups that are coming up from Rajasthan is definitely on a very high number, and it's going to grow because business is in our blood as we talk about it. We may not be IT, automobile, or we may not be into the modern sectors, but definitely we know business and we have been into the sector. So acceleration is required, was the requirement,
And that's why, yes, it makes business sense to me, and definitely is my way of giving back to the society, is Innover Startup Accelerator by the women for everyone. Excellent. By the women and not for the women. Great one. Uh, Ma'am, there was one question that government of India and state governments have been trying to do is, for example, they've been making schools or they've been making institutes and putting, making, enabling them to go to the school. But how do you get that urge in people? Because if you don't have that urge, the second step doesn't happen. So how do you deal with that? True, that's very right. Since a long journey of when we talk about pedagogies or teaching, Plato said very well that you cannot make someone learn until unless the person is hungry to learn. हमारे कहावत बहुत पुरानी है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पिला नहीं सकते हैं. वैसे ही जैसे आप आज कह रहे हैं, the urge has to come from within. Definitely the urge has to come from within. But as a mentor and as a facilitator, as a person who's senior into the ecosystem, the idea is to tell the person the journey. If I'm a diver into a pool, as you were discussing, and I don't know the depth of the pool, definitely there will be a lot of inhibitions into my heart कि कूदूं कि नहीं कूदूं तो कौन से stroke के साथ बाहर आएंगे, नीचे क्या मिलेगा. But in case I can tell you what is the depth, how much will it be, what is the surface water temperature like, and what it'll feel after the dive, definitely the dive would be better, more confident, and in a better way. That is what we are doing to our founders. अगर उनके साथ में हम बैठकर सोच सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, they will do a confident dive. That is all one can do. Ma'am, we can't leave rural behind, as you know. So, are there different approaches to the rural sector than the semi-urban and urban sector? Do you look it in a different way, or have you derived a different mechanism for that? Yes, we do need a different perspective to look at them. A few years back, I remember there was a discussion on a forum about the use of technology and internet into rural areas of the world, and India specifically. And you would be surprised, even I was surprised to see the stats. That the number of users to internet in the rural areas is much higher than the number of users in the urban areas. The same happens to every ecosystem and the same happens to every opportunity. They are a bigger number. They are a bigger and more open mindset, ready to fight in a better way. They are a bigger market. They are a bigger consumer. They are a bigger challenge makers and challenge takers. The divide between the rural and urban, till the time it is about the civic amenities or availability of the amenities, is definitely it exists. As the communication linkages and the world is becoming smaller with the internet, the education or the understanding or the exposure is reducing. So they are equating in a lot of opportunities with the urban areas. They do have a special condition of availability of resources, which I'm sure, and we are looking into it, that the government is matching it and trying to match to it. As the urban livers, I would say, it's not to look down upon, but to join hands, and together in a collaborative manner, we would be able to do better. Because they add on to your values and they add on to your strengths. So let's just identify the strengths of each other, collaborate and make businesses more successful. As sir just said, agriculture, हमारे यहाँ land की cost इतनी ज़्यादा है, शायद agriculture नहीं होता, लेकिन अगर वो उगाएं और हम बेचें, तो the collaboration can become the best. So this is my perspective towards the rural areas. Let's join hands. Great. I mean, that's from the business joining hands. Is it anything you think government can support as an accelerator like yours, and how women can approach you if they have a startup? Friends, the rural women were always forward. A lot of illiterate mothers have made their children bureaucrats. Rajasthan has many stories on it. The self-help groups have come from our courtyards and our rural areas. The queens have come from our legacies. So it's not that they are backward. It's just that they require to match the current landscape. We are trying to do that. I hope the government is trying to do that. The self-help groups need just the hand-holding. Maybe we have more centers. The government is already opening centers for them. जितना हमारे ई-मित्र यहाँ चलते हैं, उससे ज़्यादा एडवांस्ड वो होते हैं. शायद आप और मैं आज ई-मित्र पर जाकर या गवर्नमेंट की स्कीम्स को नहीं समझते होंगे या फॉर्म भरना नहीं जानते होंगे, बट वहाँ विजिलेंस ज़्यादा है. We just need to keep providing the platform and it's going to happen.
Sure. Thank you so much, ma'am. Uh, Ma'am, uh, we have, ladies and gentlemen, we have Kulsum Malik, who is the founder and director for Kaya Kalp Herbals. Thank you, ma'am, for honoring us. Uh, Ma'am, if you could explain, everyone knows about Kaya Kalp, but for everyone's benefit, if you can just explain what's your objective, how did you come up with an idea, what was your vision about? थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ इतने लोग आए सुनने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक छोटे कस्बे से आई और वैसे तो मैं नवाब फैमिली की कहने के लिए थी, लेकिन नवाबी सब ख़त्म हो गई हमारे पैदा होने से शायद पहले ही। और जी, और उसके बाद मदर ने बहुत हार्ड टाइम देखा, तो वो एक जोश और जुनून था कि कुछ बनना है। वो धुंधली धुंधली यादें थीं बचपन की, जो हवेलियाँ थीं उनमें कि हम क्यों इतना पीछे रह गए। तो एक दिन मुझे ऐसा मैं जब 8 साल की थी शायद, जब भी मुझे आता था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी और कुछ बनूंगी। परेशानी ये थी कि मैं शायद एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकी अपनी, और मदर्स को मैंने यही कहा कि मैं कुछ काम सीखना चाहती हूँ। तो इत्तेफाक लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। और वहाँ मैंने एक पेपर में पढ़ा कि उसमें आया था कि एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू था किसी का कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है ये, एक ब्यूटिशियन, जिसमें बहुत लड़कियाँ सेफ रहती हैं और इसको ज़्यादा एजुकेशन नहीं भी हो तो चलेगा। तो मुझे तो जैसे रास्ता मिल गया कि अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आप नहीं हो तो आप ये काम कर सकती हो। लेकिन मुझ में एक जुनून जो था वो ये था कि मैं इसको पूरी तरह करना चाहती थी, ये नहीं कि जब सीखा और बस चल दिए। तो मैंने उनको अपना ठीक होते ही मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और जैसे जैसे मैंने जॉब की थोड़े दिन, तो उसके बाद मुझे ये लगता था कि मैं आगे बढ़ने के लिए जैसे आज आप बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कि उसमें स्टार्टअप बहुत आ गए हैं। तो मैं उस वक्त के स्टार्टअप को अपना मान लूँ कि मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी और कोई हेल्प नहीं थी, लेकिन जब आपका जोश और हिम्मत होती है तो ईश्वर भी साथ देता है। तो मैंने कैसे तैसे करके थोड़ा बहुत लोन लिया बैंक ऑफ बड़ौदा से, और अपना एक छोटा सा सैलून डाला मैंने 78 में। शायद कई लोग तो यहाँ बॉन्ड भी नहीं हुए होंगे 78 में। तो मैंने उसको इतने जोश के साथ चलाया और इतने हिम्मत से चलाया कि मुझे मेरे क्लाइंट्स ही मुझे सलाह देने लगे कि आप इसको और बढ़ाने के लिए आगे जाइए। तो मुझे कुछ पता नहीं था दुनिया के बारे में, तो मुझे उन्होंने सलाह दी, क्योंकि किसी IPS ऑफिसर की वाइफ थी वो, मिसेस महाजन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें आंटी कहती थी कि तुम ना दिल्ली जाओ, दिल्ली में जाके उनका किसी बहुत बड़ी हस्ती का नाम लिया कि आप उनके यहाँ जाके उनके यहाँ कोर्स कीजिए। खैर मैं कैसे भी वहाँ पहुँची और जाके मैंने वो कोर्स किया, और उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज इतना कंपटीशन है, उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, जानते ही नहीं थे लोग। शायद मैं सोचती हूँ जयपुर शहर बहुत छोटा था और उस शहर के अंदर शायद मेरा दूसरा सैलून था। तो जब मैं दूसरा सैलून खोल रही थी तो मुझे ऐसे, मैं किसी से बात करती थी, किसी जो हमारे सप्लायर होते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कोई और भी खोलने वाली हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये कौन खोल ली, मैं तो अभी खोलने वाली थी, ये कहाँ से आ गई। तो लेकिन मैंने अपनी हिम्मत से, और मैंने उस वक्त भी मेरा विजन ऐसा था कि मैंने उन लड़कियों को चुना अपने साथ जोड़ने के लिए जिनको इसका शौक़ भी था और आगे बढ़ना भी था। तो वो लड़कियां अच्छी सी लड़कियां थीं, 2-4 पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। वो 2-3 लड़कियां 1 बाय 1 करके मेरे पास आईं, और इस तरह मेरा चलते चलते मैंने शायद 3-4 साल 5 साल वहाँ चलाया। और उसी बीच में मुझे इतना हिम्मत आ गई कि मैंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा ऐसा सैलून और ऐसा हेल्थ क्लब खोलना चाहती हूँ कि मैं राजस्थान में एक हूँ। मैंने उस वक्त, अब मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत, मैं शादी हो चुकी थी उस वक्त मेरी, और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। और फिर हम बैंक ऑफ बड़ौदा गए। उन्होंने, उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था,
आज देखिए आप कि मॉर्गेज के लिए चीज़ चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, आप कुछ ना कुछ चाहिए आपके पास। मेरे पास कुछ नहीं था, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो मशीनें आ रही हैं ये काफ़ी महंगी हैं, आप इनको ही हमारी सैलून को मॉर्गेज कीजिए इसी को। और उन्होंने इतने हम्बल थे वो, उन्होंने मुझे वो टाइम में 84 में 2.5 लाख रुपए का लोन दिया। तो 84 में 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था, और मैंने बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट से उसको एक खूबसूरत सा बहुत अच्छी बड़ी जगह लेके सी स्कीम में हेल्थ क्लब खोला। उस वक्त मैंने उसका नाम रखा कायाकल्प। तो 84 में मैंने इसका नाम रखा कायाकल्प, और वो मुझे ऐसे मिला कि मैं कुछ सामान लेने के लिए दिल्ली जा रही थी, तो मुझे कुछ मैंने रास्ते में पढ़ा कि उसमें लिखा था कि ऐसे कायाकल्प कर दी जाए किसी उस पर। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कायाकल्प कर दीजिए। तो कायाकल्प मैंने वहाँ से चुना और उठाया, और फिर मैंने राजमाता साहब को रिक्वेस्ट करी कि मैं चाहती हूँ कि आप सबसे बड़ी इंसान हैं यहाँ की, आप मुझे ब्लेसिंग देने आए और इसका इनॉग्रेशन करें। आप उन्होंने देखिए, उन्होंने मेरा इनॉग्रेशन किया। उसके बाद मेरी लगा के सैलून जितने खोले मैंने उनका इनॉग्रेशन किया। मेरी फैक्ट्री का भी मेरा ड्रीम था कि मैं कभी अपनी हर्बल फैक्ट्री बनाऊं, तो मेरी उस फैक्ट्री का भी इनॉग्रेशन राजमाता साहब के हाथ से कराऊं। और मेरा खुशनसीबी समझिए कि राजमाता साहब आई और उन्होंने मेरे फैक्ट्री का भी इनॉग्रेशन किया। तो मैं इसमें मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जैसे पहले यहाँ जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने कहा कि हिम्मत मत हारी और कोई हॉलीडे नहीं है, तो मेरी भी कोई हॉलीडे नहीं होती थी, नो हॉलीडे। जब शाम हो गई घर आ गए तो ये फैमिली का ही टाइम है, बहुत इनफ टाइम है। आप दीजिए सुबह भी आप जब तक जा रहे हैं वो भी टाइम आपकी फैमिली का ही है। जब ज़रूरत होती थी तब ज़रूर लेते थे। तो ये मैंने असूल बना लिया कि मैं मेहनत में पीछे नहीं हटूंगी, और किसी सूरत में भी कोई भी वजह हो तो उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो यही कारण है कि मैं इसको यहाँ तक ला सकती हूँ। Ma'am, actually very inspiring story. Coming back, matlab, because you've seen the entire spectrum, when the जब businesses बन रहे थे, जी मैम एक ट्रेंड जो नोटिस करा गया है बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड इन हेल्थ एंड फिटनेस एंड ब्यूटी, एंड सिंस यू आर डीलिंग विद हर्बल एंड आयुर्वेदा, आफ्टर कोविड व्हाट वाज द स्पाइक दैट यू सॉ? वाज देयर अ बेटर डिमांड, और डिमांड के लिए वाज देयर अ मार्केट टू केटर? सो एंड उसके आगे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे एटलीस्ट इंडिया में, so is this the right time to invest in a health and beauty sector, because everyone's become more aware, more conscious? So what are your views on it, ma'am? देखिए, कोविड के बाद नो डाउट के हाइजीन का तो बहुत ध्यान रखा जाता है, और शायद मेरी सक्सेस का राज ही यही था कि मैं शायद जब कोविड नहीं भी था तो हाइजीन के मामले में हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कि हमारे क्लाइंट्स को हमने कभी भी, एक तो प्राइवेसी का उनकी ध्यान रखा पूरा, और एक हाइजीन का बहुत ध्यान रखा कि जो चीज़ यूज़ हो गई हैं उनको बहुत ही तरीक़े से उनको साफ़ सफाई रखी गई, और हाइजीन में उनको हमेशा ये दिया गया कि डिस्पोजेबल पे आ गए हम लोग काफ़ी चीज़ों पे, और नई टेक्निक जैसे जैसे डेवलप होती गई उसको हम लेते गए साथ में। हमने इसको ये नीचे करा कि ये पुरानी चीज़ों को पकड़ के रहते, जिससे जैसे नई टेक्निक आई, जो भी चीज़ें आई उसको हमने लिया। बिज़नेस में बहुत कमी आई, कोविड के बाद बिज़नेस में बहुत कमी आई, लेकिन धीरे धीरे वापस नॉर्मल तो लाइफ हुई है और होती जाएगी। और इसमें इस बिज़नेस के अंदर अभी मैं कहती हूँ, आप कह रहे हैं कि बढ़ने के लिए तो आज ये हाल हो रहा है कि एक MBBS करते थे डॉक्टर्स तो ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट बनते थे या कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट बनते थे। आज मैक्सिमम मतलब जितने लोग मेरी पहचान में आते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं, और सारी इतनी उनको इतना अभी आज की लेटेस्ट मैं आपको बात बता रही हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ भी ब्यूटिशियन है और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है अर्नीब। तो उसके पास मैं आपके पास आ रही थी तो एक फ़ोटो आया कि उन्होंने अपने चेहरे में बोटॉक्स और जो भी कुछ करा सकते थे वो पता नहीं क्या क्या कराया है, और उनके पूरे स्किन में रैश हो गए और पिगमेंटेशन भी हो गया। तो उसने मुझसे पूछा
कि मम्मा अब हम तो हर्बल करने वाले हैं, अब हम क्या करें। मैंने कहा इनको कह दो, आप देखिए हम कोई मिरेकल तो करेंगे नहीं आपके लिए, लेकिन ये है कि स्लो होगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप पेशेंस रखिएगा। तो हमने उनको अपने हर्बल ट्रीटमेंट्स बताए और सामान दिया, और वो लेके गई, बहुत खुश होके गई, एक ट्रीटमेंट कराया भी वहाँ पे। तो हर्बल का ये होता है कि देखिए कोई फ़ायदा अगर नहीं है तो नुकसान नहीं है। तो एक हम इस तरह से हमेशा सेफ रहे, और खुदा के रहम रहा हम पे कि हमेशा वो साथ दिया, और हमारे से इस तरह वन बाय वन लोग जुड़ते गए। अभी तो इतने बड़ा हो गया जयपुर के, बहुत अलग हो गए। Thank you, ma'am, for sharing that. Ma'am, I'll move forward to Suchita, ma'am, uh, founder and CEO for MERN Plus Softtech. Uh, Ma'am, if you could tell every one of us the vision of your firm. So MERN Plus is about getting the right talent matched with the right kind of requirement from various industry clients. See, the biggest challenge any company faces is hiring the right kind of talent. And hiring HR is one of the costliest and the most time consuming process for any organization, whether it's a startup or whether it's a big organization. And that's exactly where MERN Plus as a company or as an organization comes in, where we, so you have an idea, a company owner would have an idea, and he wants the idea to be implemented immediately, because there is always a time cost attached to your idea. Now, for implementing this idea, you need the right kind of talent on the development technology side. If you go through the hiring process, it's a time consuming thing. Your idea might fade out, you might have a different idea coming up, a lot of iterations would go in. So that's exactly where MERN Plus comes in, where we provide them the right kind of talent immediately, somebody who can join your team, merge with your existing team immediately, and start working from day one. So we are not asking you that you wait for that time of, for the person to come on board, get settled, take that time. No, he should be there in the organization and be productive from day one. And that's exactly what MonPlus does. Uh, because there are a lot of startups over here. Everyone has this challenge of one getting the right talent, which probably marrying the skill and marrying the ask what it is, and if you're able to do that, nothing like it. Uh, Second is, how do you ensure that you're retaining the talent? So there are a couple of things that we as a company try to do. One, we will try to pick up the talent which is already good, experienced talent, somebody who has that experience to go and be productive from day one. So that's exactly where we invest in picking up the right kind of talent. So any talent that we've picked up in our company has obviously gone through a lot of rigorous uh, interviews and tests already. So we have already done that part of the labor part for you, where you have to actually analyze whether the talent is the right kind of talent or not. We've already done that process for you. So you as a company need to just pick up that right person, maybe from 2 or 3 right talents, pick up the right one for you, and just go ahead. So the work of getting and the right talent, we've already done it for you. So we've done that process for you. Sure. Do you also upskill your talent pool that you have in order to get a better job? So we will. I mean, why will I ask my talent to get a better job? He's doing a better job in my Uh-huh. company. So Not your talent, the talent pool. The no. So see, we are as a company, we are already working with experienced talent. Yeah. So, I mean, we do have certain programs for them, but this is for the experienced talent, where they, in case they are stuck in their work or they need certain more knowledge from the industry leaders, that's where
me and my founders, as you know, would come in and help them get that. So we definitely help them, up boost the already existing experience they carry. Uh, Ma'am, a last question. One of the biggest challenges that the country has been facing in the skilling program is we are skilling people. We are trying to talk to the industry partners. We are getting the requirement from the industry partners, and they are getting skilled, but not getting the job. Is that OnePlus can do something about it? See, all I would like to say here is we don't want people with degrees. We want people with talent. Somebody, I mean, we are even okay with people who have certain level of talent and has that urge to improve on that talent. But, I mean, that's a very valid point that you've actually, brought up. And if we go a step back on this, we really need to work very hard. Maybe, I mean, the government needs to work very hard. We, as entrepreneurs, need to work very hard. The professors need to work very hard in nurturing the right talent right from the lowest education level. So, today also, if you see the Indian education level, it's the same bookish thing. आपको जो set pattern है वही पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? If today I have an interest in a certain field, why can't I have a college, or why can't I have a set of professors teaching me only that part, because I'm good at it and I have that zeal to learn it. And that's exactly what is lacking. And I think that's where, if we start the improvement, I think we can do wonders there. Sure. So, in a nutshell, we need to overhaul our skilling program, right? Very well. And I think that should be done right from the root level, not after you've done your engineering course or after you've done your MBA. I mean, I think this should be done right from the pre-primary school. Sure. I mean, that's the difference, what China is doing today and what India is doing today. Sure. That's the big difference. Absolutely. Thank you so much for that insights. Everyone, coming to Mr. Anurag Singh, co-founder of Acho, India's leading ethnic wear brand for modern women. They stand out for blending traditional fashion with contemporary sensibilities. Thank you, Anurag, for joining us over here. For everyone, I asked the same question. What's your vision to scale up your startup, and how Rajasthan can get benefited out of it? Yeah, so thank you everyone, and thank you ET for inviting this event. I can see wonderful faces and great energy, and thank you so much for all these to all the speakers who have given the great insight. Acho is a word, is a Marwari dictionary's first word. Me and my wife, we started Acho in 2018 with the ethos and with the plan of having the handcrafted items, and we currently are dealing with ethnic wear, which is a premium segment ethnic wear, and we are directly connected with our customers. So it's a D2C platform. When we started with zero, almost zero. Last year we closed around 51 CR, and this year, this financial year will be definitely crossing 100 CR. We have around, yeah, thank you so much. So we have around 1,000 SKUs. Thank you. So we have around 1,000 SKUs, and we are planning to just upgrade that in the coming year, and more categories. Coming back to your question about the How Rajasthan will be benefiting from this idea in terms of employment, in terms of you taking the brand out. yeah. So currently we so when me and my wife started, we started from so I was in Bangalore and she was in Bombay. We started couple of months from Bombay, but since we both hail from Rajasthan, हम राजस्थानी आ गए क्योंकि यहाँ पे compliance wise everything was pretty easy to set up a business. When we came in 2018, since then till this year, the graph has increased from our factory is based in Jaipur, and we are actually delivering the customers. So our total sales ka 90% is going
to the domestic state except the Rajasthan. And and also 10% of the sale is going international. So we are doing export also. That's again a D2C. So uh, I think Rajasthan has a rich heritage, cultural already effect, and with the technique of with the help of modern techniques, business techniques, especially, we can do wonders. And skilled labors are already there, especially for our category. So I think it'll be amazing to see in next decade how Rajasthan is contributing to the Indian economy. And yeah. Yeah. So, I was going through the website and great designs, but the price point that I saw was from 4,000 to 10,000. Uh, there's a question that came to my mind, and like a store like Good Earth, right? Very simple things, but very expensive. So how do you make both the things work with a less price point, but still making a brand? How do you achieve that? Yeah. So great designs. Of course, the entire credit goes to Rimjim because she's the designer and she's my. As I work under her, and she's the main founder and CEO of the company. About the price point, I think customer ने बहुत help करी हमको price point set करने में. When we started our business, हमने start कर दिया था राजपूती पोशाक से, and at that point of time in 2018, we were not aware कि 30,000 40,000 की जो प्राइस रेंज है वो ऑनलाइन नहीं बिकेगी. एंड हमने अच्छा सा शूट भी कराया, 15-20 हज़ार रुपये लगा दिए शूट के अंदर उस टाइम. और वो चला नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज द प्राइस पॉइंट वाज वेरी हाई. एंड वी अगेन केम बैक एंड वी थॉट कि हमने क्या गुफअप किया. एंड हमको लगा कि हमको ये मिड प्राइस रेंज जो है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुर्तीज़ वॉज प्रीटी अवेलेबल जो मासी के लिए थी, एंड जो अराउंड 1,500 रुपीज़ के आसपास आती थी, एंड दैट वाज फॉर दी मास ऑडियंस. एक कुटौर का हमारा एक सेगमेंट था जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. जो बीच का सेगमेंट था दैट वाज मिसिंग, एंड दैट्स हाउ वी फाउंड द गैप कि यार ये सेगमेंट ऐसा है जिसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक कस्टमर विल गिव यू अ ग्रेट फीडबैक कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और आपके ग्रॉस मार्जिन जो आपकी मेट्रिक्स हैं उसको यू हैव टू कंसिडर दैट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज विदाउट कंसिडरिंग दैट पार्ट यू विल बी इन अ लॉस. और वो धीरे धीरे लॉस इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि आपको बाद में पता पड़ेगा कि यार हमने बहुत गलती करी है. सो बिजनेस के फर्स्ट स्टार्टिंग फेज के अंदर ही प्लीज़ फिक्स द यूनिट मैट्रिक्स विच इज़ वेरी वेरी क्लियर कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स कॉक्स कितनी है और आपका ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए. अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस होगी और अकॉर्डिंगली एमआरपी होगी. Great. I think in your answer, you tied up two things. One was by the woman leading as your better half leading as a founder, and second is and the janoon that you doing a shoot for 12,000 still not accepting, and sort of sir retail में शायद government ठीक कर रही है, but not in agri because he was better to set up a business and run in at least in the fashion sector. That's what he says. Uh, so, fashion is a market in India where IP is not very evolved. So, how do you, this must be a very tough challenge for you. Are you doing anything for that? So, IP is very, very important for any of the brand who starts. Protecting your brand is very, very critical in the start stage. जब हमने आँचो शुरू किया था तो इसके 2 पॉइंट थे. हमने आँचो वर्ड क्यों पिक किया था? पहला तो it has a meaning which is too good, and secondly it starts with AA, so that whenever I'll list my brand to any of the marketplace, I'll get the organic reach. And the third reason was कि और कोई domain available था ही नहीं उस time, honestly. अभी भी available नहीं होते domain. So the first thing which we did was just to protect our brand. We have taken all the trademarks and everything, but फिर भी there are bad people in the world and in India. Someone tried to copy the word mark which is उन्होंने spelling mistake कर ली थी. AACHO की जगह AACHO का उन्होंने domain ले लिया था. Which actually was quite surprising to us, and it's a cyber squatting sort of thing. Sorry. ठीक है. So
So I think it's very important for every brand to protect it. कुछ पैसे लगेंगे, बस 25-30 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन आप जितने भी आपके डोमेन्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के डोमेन्स हैं, please take your word mark, please register your trademark. It is little complicated right now, right from registering till getting it approved, but please get it done because it is very, very important. Great. So, one with fashion, there is something which has not been explored. What are your views, fashion and quick commerce? So, do you think quick commerce and fashion can go hand in hand? Like, can I order a kurta on Swiggy or Zomato? या सो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको. हमने एक सर्वे किया था और हमको ये लगा कि सर्वे में अलग अलग चीज़ें आएंगी, बट सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये थी कि एक ऑर्डर जो प्लेस होता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कस्टमर को लगती है कि मेरा ऑर्डर कब आएगा. सो आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर द ओनली क्वेरी विच कम्स टू द कस्टमर्स माइंड इज दैट कि टाइमलाइन क्या है, राइट. सो दैट गिव्स अस अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दैट जितना जल्दी हम उसको डिलीवर कर पाएँ उतना ही आपके रिटर्न्स कम होंगे, उतने ही कन्फ्यूजन जो स्टेज रहती है कस्टमर की मैं लूँ या नहीं लूँ वो भी क्लियर हो जाएगी. आई थिंक दिस इज़ क्वाइट डूएबल. ऑल वी नीड टू डू इज़ हैव अ ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ टेक और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन्वेंट्री के अंदर एंड दिस मैजिक कैन हैपन. सो Doable. So this is doable. This is doable, and we are totally inspired, and we are ready to reach that to reach that mark. Especially, मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्विगी के अंदर आछो के सूट सेट्स मिलेंगे, but yeah, we can always give a gift hamper of आछो, which has maybe a bag or maybe a jewelry or something, which can do wonders. Yeah. Brilliant. So I'm going to open the floor for some question and answers because I've been asked by ET to not ask any more questions now. Hi, sir. Thank you very much. My name is Gaurav Dhwaj. It's a wonderful panel. The simple question, anyone can answer on the floor. What is the biggest legal challenge you guys have faced at the initial stage of forming your business? As an accelerator, if I tell you, running across with founders, they do not know the importance of legal issues in business. That's the biggest issue right now. Yes, we have to really train them, teach them that what is the importance of legal. He was very right in saying, do take your patents. They are expensive to sound right now. But the kind of dent and the problem they can create is much bigger. So legal issues, the awareness about legal issues is the biggest problem for now. That is what I would say for the business world and the startup ecosystem specifically. Okay, so hi sir. My question is to Mr. Khandelwal, since you come from a background that has business in their veins. So, I mean, what is important for an entrepreneur to focus on? I mean, people like me who are young and, just started the business. Like to scale up, to build a brand, or, people are always confused. I mean, what do? We work towards scalability, we go towards, building a brand, or, focus on the profits. So for me, as per my experience, right, हम लोग तो देखिए basically grassroots जीरो से जुड़े हुए हैं. तो मैं मेरी बात बताऊं, I have been a successful failure in many ventures. Very proudly. Successful failure in many ventures. तो हमने अपनी गलती से एक चीज़ सीखा कि देखिए आजकल जो यूथ है, right, I am running in 49, so what I can see is the youth भटका हुआ है, ठीक है. तो here because we don't have information, we are over informed. हमारे दिमाग में information नहीं, बहुत ज़्यादा information है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कहता है कि any person who is pursuing basically business or career, first of all is clarity. नंबर 1 कि मेरे को सबसे पहले बिजनेस करना है या नौकरी करनी है. देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, एक तो होता है प्रोफेशनल, एक होता है एंटरप्रेन्योर. मैं मेरे वर्ड में हमारे बिजनेस में हम लोग प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर बिजनेस करना है तो परिवार के लोग तो कितने लगे आएंगे, तो प्रोफेशनलों को भी हमको स्किल देनी पड़ेगी. तो मेरा मानना है क्लियरिटी ऑफ द सेक्टर एंड देन क्लियरिटी ऑफ द व्हाट यू वांट टू डू इन दैट सेक्टर. आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बट आप क्या बनाना चाहते हैं, टायर बनाना चाहते हैं, स्कूटर बनाना चाहते हैं. सो ये सब थोड़ी सी होमवर्क होता है और उसी में आदमी फेल होता है. तो मेरा मानना है कि क्लियरिटी ऑफ द मतलब थॉट्स
has to be there. Only then person can be success. Depth of Add to knowledge. this, sir, very simple statement. चाहे आप ऑलरेडी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हो, चाहे आप नए सिस्टम से आए हो, जैसे मैम ने बहुत क्लियरली बोला और सर पुराने सिस्टम से आए, क्लियर फोकस, विजन और उस पर लगे रहना, not to give up is the way. Be a failure and be proud of it. Don't want to fail and want to keep on burning is the only game. All hand in hand, and that is why you are an entrepreneur. An employee works on one segment of your service or your system. An entrepreneur and a founder doesn't have one segment to choose for. अगर मेरे ऑफिस में कुछ नहीं तो शायद पियोन भी मैं ही हूँ. And it's being proud of it, nothing wrong. For some time, till the time you cannot bear the cost and you cannot bear the tension and the problem, and your business is sufficient enough to host all rest of it. You are everything. There's no choice. I think you मैं answered थोड़ा सा आपका आंसर का डिटेल unit में, metrics. क्योंकि ऑडियंस में भी Unit सुनना metrics चाहेगी, is ठीक है? important. Despite time is out, right? Yeah. But since I am from Jaipur and I always try to, as I told you, कि हमने अपनी फेलियर से क्या सीखा? हम लोग सुबह लिस्ट में डालते हैं टू डू लिस्ट, बट आई प्रिपेयर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, कि कई बार आप इमोशनली आगे कोई गलती नहीं कर जाएं. तो मेरा मानना है कि जो बिजनेस में सबसे बड़ी, जो आदमी को जल्दी बहुत है, ठीक है, बिजनेस कोई भी जल्दी नहीं हो सकता. आज किसी भी इस इनोवेशन के वर्ड में भी 5-7 साल तो सोचने से लेके और धरातल पे कामयाबी से लेने के. तो मेरा मानना है कि तसल्ली से किसी भी बिजनेस के अंदर आप जाते हैं तो आप स्टडी करें व्हाट आर द, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि आपके माइंड में है वो चीज़ वर्केबल है. अगर आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, उसकी जरूरत है या नहीं है. लाइक मेनी थिंग्स वी डिड, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उसको उसका फायदा भी हो रहा है, बट पीपल आर नॉट रेडी टू पे. So it doesn't mean that we are a failure. Of course, our product was good, but maybe market, this is not the right time. So I think this is my advice based on my experience. Thank you. So I'll just add to it. Before even thinking about your idea, the product that you want to bring in, the market, the strategies, I think what is important is you really need to think if you are an entrepreneur. क्या आप वो जॉब कर सकते हो? सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ जॉब दैट यू हैव टू डू राइट फ्रॉम अ सीएक्सओ सीईओ लेवल टू द ऑफिस बॉय. अगर आप वो सारे काम कर सकते हो, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर. देन थिंक अबाउट योर आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज. बिफोर दैट, आई थिंक exactly, I think an entrepreneur has to be the CEO as well as he has to be the office boy of the company. If very simple, just a jokes apart, that peon to promoter की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. Exactly. और ये है फिर आइडिया सोचो. That's what we say, that whenever we plan, right, कि that peon to promoter has to be on the same wavelength. The meaning is that कि मेरे पियोन को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मेरे ऑफिस में आ रहा है तो उसको चाय कैसे सर्व करनी चाहिए, I think किसको कैसे सर्व करनी चाहिए. देखिए, हर काम की अपनी एक ब्यूटी है, राइट, और हर आदमी का एक कर्म के हिसाब से भगवान ने अपने अपने आदमी को काम दिया है. बट अगर वो उसमें मास्टरी कर ले तो स्टिल ही कैन डिलीवर बेटर, ही कैन ग्रो. अदरवाइज ऑफिस में अगर मान लीजिए हमारे कोई पियोन है तो उसको कितना ग्रोथ देंगे? ग्रोथ तो तभी मिलेगी जब वो अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करेगा. थैंक यू. Right. So, because we are ahead of time, I'll thank far ahead of time. Thank you, ET, and thank you, honorable panel, for making some time and giving some ideas and insights to the public. Right? Thank you Thank so you so much, much. everyone.